Welcome back once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy. And today we are going to proceed ahead in our perspective hot topic of the day, that is the Takkar series. We go ahead every day, as we all know. So आज का हमारा जो topic है, that is another step taken up by the central government towards the digitalization. Okay, talking about once again the fourth industrial revolution of this planet and taking a step further by the nation of India towards the digitalization, and this time this has come for the sake of the Indian farmers. Yes, you heard it correct. This time we are talking about the digital process of the Indian farmers. So we already know it very well that how the e-technology system has come up into the aid and support of the Indian farmers, how the e-technology and the digital technology itself is supporting the Indian farmers at its best. And the year that has passed just 4 weeks ago, that is 2022, it was the year which marked the government's promise to double up the farmers' income. That is, by 2022, the government of India promised that by 2022 itself, the farmers' income would be doubled up. But unfortunately, sad but true concept, this couldn't happen. Yes, because of the multiple reasons, one of the strongest reasons which we could call up here is the pandemic, the COVID-19 pandemic, the time period being 2020 to 2021. Apart from this, there were also multiple loopholes present inside the government and agricultural system, okay, the nexus. And apart from that, some of not so good actions, okay, like failure into the e-mandis, failure into the e-NAMs, that is electronic national agricultural markets. And apart from that, some issues with regard to the geography as well, because of which the so-called mission of doubling up the farmers' income by 2022 couldn't be succeeded as per the promised time. But nevertheless, it's very well said that it's better to be late than better to never reach, right? That it's better to be late, that's fine, okay? So government is so far, as of now, we talk about today's date, that is 25th of January. The government is so far silent up onto the next date. That yes, 2022 has passed. What will be the next year, or what would be the next target year when the government can claim it that by this year the farmers' income would be double? So as of now, we don't know, okay, because the government has taken up a silent step so far here. The government is absolutely silent on this, and we understand it very well. That is, doubling up and that to the farmers' income is something which is not a child's play. And we need a proper strategy, proper analysis, and proper platforms for it as well. And apart from that, what we have seen, okay, that is in a single statement, but when we can call it, that is, we need something that is out of the box type of that, okay, something that is beyond the initial things whatever we have, okay. So coming back to the point, that is, this out of the box thing is the digitalizing of the records, of the crop records, okay, cultivated by the farmers. So अगर हम गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात करें अब फिलहाल, तो जो न्यूज है हमारे इंडियन एक्सप्रेस से जो हमें मिला है आज की डेट में, दैट इज गवर्नमेंट टू डिजिटलाइज द रजिस्ट्री ऑफ द खारिफ क्रॉप, ओके, खारिफ क्रॉप के इस बार जो रजिस्ट्री होगी, जो उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, अब की बार वो पटवारी सिस्टम से ना होकर, यानी कि वो ऑफलाइन ना होकर वो ऑनलाइन होगा, यानी कि डिजिटल होगा. So let me make it once again clear, that is strengthening our agriculture, digitalizing the farm sector, right? So coming to the point here once again, जो आपको नोट करना है यहाँ पर, that is 10 states throughout our nation, okay, will be having the National Remote Sensing Centers data satellite, okay, satellite data, that is followed by the ISRO's data, okay. These 10 states will be using the satellite system in order to register the kharif crops of the upcoming season, ओके. तो 10 स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम. ध्यान रखिएगा कि ये ऑल ओवर इंडिया कैंपेन नहीं है. अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो 10 स्टेट्स में शुरुआत किया गया. अगर हम 10 स्टेट्स की बात करें तो उनके नाम यहां रहे आपके स्क्रीन पर. दैट इज, इसमें यूपी का नाम है, इसमें मध्य प्रदेश है, वी हैव गॉट उत्तर प्रदेश, वी हैव गॉट मध्य प्रदेश, वी गॉट गुजरात, वी गॉट राजस्थान, वी गॉट ओडिशा, वी गॉट कर्नाटका, केरला, Andhra, Madhya Pradesh, Maharashtra, as well as Tamil Nadu. Okay, so guys, the names of the states, they are very important from your prelims as well as mains perspective, because questions बहुत simple हो सकते हैं यहाँ पर कि which among the following states are there who will be having the digital registry of the kharif crops this year or maybe the following year as well.
राइट। सो क्या क्या स्टेट्स के नाम है, चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। इट इज यूपी, एमपी दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान फ्रॉम द वेस्ट, देन फ्रॉम ईस्ट इट विल बी ओडिशा। तो नॉर्दर्न बेल्ट से अगर आप देख रहे हो तो 5 स्टेट्स हैं आपके पास, दैट इज ओडिशा, गुजरात, राजस्थान फ्रॉम द वेस्ट, एंड देन फ्रॉम द सेंटर दैट इज यूपी एंड द एमपी. And then we go towards the south, we got Maharashtra, we got Karnataka, Kerala, Andhra and Tamil Nadu. Okay, so in total we have got 10 states, those who will be having the data, the satellite data from the National Remote Sensing Centers, okay, that comes under the purview of the ISRO, that is Indian Space Research Organization. Okay, so guys, earlier ये जो system था, that is identification and registry of the crops, okay, कि कितने crops किस particular farmland पर जो है उगाए गए हैं, किस farmer ने उगाए हैं वगैरह वगैरह, ये एक particular institute या एक particular इंसान के हाथ में दिया जाता था। हर एक गांव में ये एक होता है, हर एक विलेज में, हर एक टाउन में, जहां पर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी जा रही है, जहां पर भी फार्मिंग एक्टिविटी करी जा रही है, इस इंसान को हम कहते हैं पटवारी। Okay, so what is the role of the patwari? So patwari goes ahead into the each and every farmland, okay, and sees that whether this is a kharif crop or rabi crop or a zaid crop, whatever the type of a crop, and apart from that, what is the amount? Okay, that is what is the actual figure of the particular crop. राइट कि सोइंग कितनी हो रही है, कल्टीवेशन कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, और ये वो पूरा डेटा कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट के पास वापस भेजते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड्स बनाए रखती है कि हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस खारिफ सीजन वी हैव गॉट दिस मच ऑफ द खारिफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड थ्रू आउट द नेशन। ओके, सो अभी जो बाकी के स्टेट्स बचे हैं हमारे पास, उन स्टेट्स में जो है पटवारी ही जो है ये काम करेंगे, लेकिन जो 10 स्टेट्स का हमने नाम लिया, यहां पर जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स के डेटा के थ्रू, ओके, ये डेटा जो सैटेलाइट से लिया जाएगा, जो कि इसरो के अंडर काम कर रहा है, ये खारिफ क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, और ये पूरा डेटा जो है सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। Okay everyone, so this is one of the very wonderful steps taken by again the central government towards supporting the farmers and taking up the concept of e-technology in aid and support of the farmers so that we can develop the income of our farmers in the upcoming near future. ध्यान रखिएगा 2022 का टाइम जो बीत चुका है, हमारे फार्मर्स की इनकम अभी तक डेवलप नहीं हुई है as per the government promises and policies. But as we discussed, yes, there were many issues in between. There were many much failures as well with regard to the e-NAM, electronic national agricultural market. Apart from that, e-mandis were not so successful at that very time. And apart from that, there were also the very biggest issue because of which the whole planet suffered, that is the COVID-19 pandemic, time period being 2020 to 2021. Okay, so with all of these reasons particularly collected itself and provided a huge setback to the government's policy, that is doubling up the farmers income by 2022. ओके, सो ठीक है, 2022 तक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हो सकता है हम 2024 या 25 या 26 तक का टाइम पीरियड हम एक ले चलें कि क्या होगा अब अगला टारगेट, हमारा टारगेट ईयर क्या होगा जब हम अपने फार्मर्स की इनकम डेवलप कर सकेंगे। ओके, और उसके लिए अगर आप देखो तो एब्सोल्यूट वंडरफुल स्टेप्स उठाए गए हैं। ओके, ई मंडीज को अभी हम जो है पूरी तरीके से रिफ्रेम करके, रिफॉर्म करके दोबारा लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ई मार्केट अगर हम बात करें, ई नैम की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो वो अब अपने जो है रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका है। ऐसी बात नहीं है कि वो फेलियर है। ओके, यस, स्पीड उतनी नहीं है, पेस उतना नहीं है, उतना ज्यादा स्विफ्ट एक्शन इसमें नहीं हो पाया, बट यस नेवरदलेस हो नहीं पाया, इसका मतलब यह है कि नहीं हो पाएगा। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, होगा, जरूर होगा, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, दैट इज थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन वो होगा जरूर फॉर श्योर। ओके, सो उसी के पर्सपेक्टिव से ध्यान में, इन्हीं पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने निकाला ये स्टेटमेंट, दैट इज इनटू द 10 states of our nation, the kharif crops, they would be registered through the digital means and not by the patwari. Okay guys, तो ध्यान रखिएगा, पटवारी नहीं है इन 10 states में, कौन है, हमारा सैटेलाइट डेटा है। ओके, यानी कि डिजिटल वे से खारिफ क्रॉप्स को रजिस्टर और आइडेंटिफाई किया जाएगा और इस डेटा को डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू हैव द एक्यूरेट डेटा, एग्जैक्ट डेटा, तो जो ट्रू, एक जो जेन्युइन डेटा है वो सरकार के पास पहुंचेगा, जिसकी मदद से सरकार जो भी पॉलिसीज हैं, ओके, जो भी XYZ पॉलिसीज हैं, या हम बात करें बेनिफिशियरी ट्रांसफर की, अगर हम बात करें लाइक डीबीटी हमारे पास है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, ओके, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, या जो भी फार्मर सपोर्ट का जो भी स्कीम है, वो इस डेटा के थ्रू कैलकुलेट करके प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, सो दैट द एग्जैक्ट बेनिफिशियरी विल गेट द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स।
राइट तो ये एक फ्रेम है जो हमने तैयार किया है गाइस, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स एंड 10 स्टेट्स का नाम आपको दिमाग में रखना जरूरी है। यहां पर ये भी दिमाग में रखना है कि पटवारी काम नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, ओके, जो कि इसरो के अंडर काम कर रहे हैं। ये सैटेलाइट डेटा यहां पर प्रोवाइड कराएंगे और यही डेटा जो है कलेक्ट करके इसको जो है टैली करके खरीफ क्रॉप्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। Okay everyone, so thank you for joining. I hope the session was full of information and knowledge, and it will for sure help you in your prelims as well as mains examination of the UPSC CSE. And apart from that, please don't forget to like the video, subscribe for the channel, okay, and please do not forget to provide your valuable feedback into the comment box. Okay guys, see you soon. Bye bye, take care, Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lukmaan IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.